So we are starting off with waves today. So the question waves, ये wave है क्या? जो हम लोगों को लहरें दिखने को मिलता है समुद्र में, हाँ वो waves. Sound waves. See, waves is any sort of disturbance. कोई भी disturbance को हम लोग wave बोल सकते हैं अगर वो propagate कर सकता है. Means अगर disturbance सिर्फ एक ही जगह में हो रहा है, then it is oscillations. जो आप लोगों ने किया है pendulum, right? लेकिन अगर ये disturbance can move from one point to another, एक जगह से दूसरी जगह में move कर सकता है. जैसे I am speaking, my voice box over there, the stretched tissues are vibrating. हाँ क्या? Vocal cords, right? Vocal cords, they are vibrating, but that vibration is producing a sound which is reaching your ears, right? Now, if that vibration can propagate, you can call it a wave. जैसे मान लो सिग्नल पे बहुत सारा गाड़ी खड़ा है, and the signal opens, and then one by one the car starts moving. Does all the cars start moving together? No. No. एकदम beginning वाला पहले move करते हैं, उसके बाद next वाला, उसके बाद next वाला, right? So what is happening? This motion of the car is gradually propagating from one point to another. तो उसके लिए particles को एक जगह से दूसरी जगह में जाने का जरूरत नहीं है. The particles need not move from one point to another. The particles can be at their own positions. They just pass out the disturbance. ठीक है? So that is what you call waves. Mostly we'll be discussing sinusoidal waves. What is sinusoidal waves? Where the particles follow simple harmonic motion. मतलब वो वेव में जो पार्टिकल्स है या वाइब्रेशंस है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो करता है. सो वो साइन फंक्शन फॉलो करता है एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम साइनोसॉइडल वेव्स. इज दैट क्लियर? एंड ऑब्वियसली विल बी डीलिंग विद प्रोपेगेटिंग वेव्स. नाउ बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विथ एनी मोर डिस्कशन, हम लोग को बेसिक कुछ चीज समझना है. राइट दिस डाउन. फर्स्ट, whenever a disturbance propagates from one point to another, whenever a disturbance propagates from one point to another, whenever a disturbance propagates from one point to another, one point to another, to another, then it is called a wave. Then it is called a wave. Called a wave. Okay? Now, on the basis of direction of vibration, write this down. On the basis of direction of vibration, well, so what did I say? On the basis of direction of vibration, waves are classified into two types. Basis of direction of vibration. One is transverse waves and second is longitudinal waves. तो ट्रांसवर्स वेव्स किसे बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किसे बोला जाता है? एनी आइडिया एनीवन? Right. So if a wave travels along this direction and the vibrations take place perpendicular to it, कहां पर होता है? जब देखना पानी में अगर हम लोग कोई स्टोन थ्रो करते हैं तो जहां पर स्टोन थ्रो करते हैं वहां से रिपल्स क्रिएट होता है और वो फैलता है चारों ओर. सो जहां पर स्टोन हम लोग थ्रो करते हैं वहां पर क्या हो रहा है? इट मेक्स द वाटर लेवल वाइब्रेट अप एंड डाउन. सो all the water level particles, they actually move in the up and down direction, but the waves, they propagate horizontally. All right, so the direction of vibration of the particles are perpendicular to the direction of motion of the wave. तब हम लोग क्या बोलते हैं उसे? ट्रांसवर्स वेव. और लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन सा है? लाइक से यू हैव सीन डोमिनोज इफेक्ट. तो उसमें क्या होता है? एक जन को धक्का देते हैं तो वो नेक्स्ट वाले को धक्का देता है, वो नेक्स्ट वाले को धक्का देता है. ऐसे एकदम सही बात है. सब पिज्जा में ही पहले जाते हैं तो वो डोमिनो इफेक्ट. हाँ, डोमिनो इफेक्ट. हाँ, डोमिनो इफेक्ट. एक खाकर आते हैं actually it's my mistake. Domino effect. So domino effect কি হয়? Domino effect হচ্ছে when one vibration takes place
it collides with the next particle, that collides with the next particle, and in this way the vibration or the disturbance travels from one point to another. So in this case what happens, the vibrations are taking place along the direction of motion of the wave. Okay, the same thing happens in case of sound waves. साउंड वेव्स में भी सेम चीज होता है, ठीक है. सो जस्ट ट्रांसवर्स वेव्स में लिख लो, वाइब्रेशंस टेक प्लेस परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ वेव. ट्रांसवर्स वेव के लिए वाइब्रेशंस टेक प्लेस परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ वेव. वाइब्रेशंस टेक प्लेस परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ वेव्स. मोशन ऑफ वेव्स. और सेकंड में लिखो, वाइब्रेशन टेक प्लेस, लॉन्गिट्यूडनल के लिए वाइब्रेशन टेक प्लेस along the direction of motion of waves. नेक्स्ट वाला ट्रांसवर्स में क्या लिखे तुम? खत्म. नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल के लिए वाइब्रेशन टेक्स प्लेस along the direction of wave. Vibrations take place along the direction of wave. Along the direction of wave. ठीक है? That is longitudinal wave. And examples you can write the ripples on the water surface, or simply light wave. Light wave. Light wave is a transverse wave, or sound wave. Sound wave is a longitudinal wave. Okay. Light wave is a transverse wave and sound wave is a longitudinal wave. Alright? Again, on the basis of dependency on the medium, on the basis of dependency on the medium, waves are classified into two types. क्या क्या? One, mechanical waves. Mechanical waves वो क्या होते हैं? What are mechanical waves? That require material medium. मतलब material medium नहीं रहेगा तो वो propagate like sound wave. Sound wave is a mechanical wave. Okay? So mechanical waves require material medium. Require material medium for propagation. Are electromagnetic waves. Electromagnetic waves, they do not require material medium. Do not require material medium. ठीक है? So obviously the example for mechanical waves is sound waves, and the electromagnetic waves is light waves. ठीक है? So all the waves like radio waves, microwave waves, all these things are electromagnetic waves. Okay, so we'll have a chapter specified on electromagnetic waves in class 12, but for now we'll be restricting ourselves to mechanical waves, that is only the type of sound waves. ठीक है? Most of the different types of sound waves and their characteristics. All right? Yes sir. Sir, electromagnetic waves গুলো ডিফ্লেক্ট হয় না তো on electric and magnetic field? হ্যাঁ, ডিফ্লেক্ট করা যায়, কেন করা যায় না? নিশ্চয়ই করা যায়। হ্যাঁ, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস যদি আমরা Now we need to know some definitions. We need to do some definitions. First definition is frequency. What is frequency? Frequency is number of oscillations in unit time. ठीक है? Frequency is number of oscillations in unit time. How many oscillations are taking place in 1 second? Is that clear? Now, second is time period. So, regarding waves, time period is defined a little differently. What is time period?
time period is the time taken to move from one crest to the next crest or one trough to the next trough. Now you all know by this time that whenever a wave is represented like this, these points are called crests, and these points are called troughs. Right? So time period is time taken to travel between consecutive. What's the spelling of consecutive? अच्छा, time taken to travel between consecutive crests or troughs. Consecutive crests or consecutive troughs. अच्छा, wavelength. हाँ बोलो. Two consecutive crests ना कि शुरू consecutive. जे कोनो একটা two consecutive crests or two consecutive troughs. ठीक है sir? So wavelength is what? What is wavelength? Wavelength is the distance between consecutive crests or troughs. ठीक है? Distance between consecutive crests or troughs. मतलब या तो यहां से यहां तक this distance, or you can say distance from this point to this point. This is also one wavelength. This is also one wavelength. Lambda, right? Like it is called lambda. Okay. Now, so you know frequency, time period, and wavelength. Now, see what we try to visualize. We try to visualize that this wave is made up of some sort of compartments like some repetitions that creates the whole wave. So that repetition starts from one of the crest and ends at the next crest, or starts from one of the trough and ends at the next trough, and that's why we call it one wavelength. That is as if length of one wave. Is that clear? So frequency can over here also be defined as the number of waves passing through any particular point in 1 second. ठीक है, ये particular frequency is number of waves crossing any point in unit time. Number of waves crossing any point in unit time. Frequency টাকে আমরা এরকম ভাবে লিখতে পারি. Number of waves crossing any point in unit time. Is that clear? Yeah. Clear to all of you? Acha. Now, an important relation. Listen, what is wavelength? Distance between consecutive crests or troughs. And what is time period? Time taken to travel. Time taken to travel between consecutive crests or trough. So, what is distance by time? Velocity. Right. So you can write wave velocity, wave speed or wave velocity is equal to wavelength by time period. Happy birthday Subhadip related. Time period. ठीक है? So you can write this as V is equal to lambda by T. And you all know that time period and frequency are always reciprocal of each other. So you can also write or V is equal to F into lambda. Okay? So these are some very important relations and very basic relations. T is equal to, F is equal to 1 by T. F is equal to 1 by T. Alright? Yes, sir. Acha. Atomic structure is body. Obviously you remember this
fourth definition, the amplitude. Remember what is amplitude? Maximum The displacement. height of the Right. Maximum displacement of the vibrations, not the wave. ठीक है, maximum displacement of wave नहीं, किसका maximum displacement? Vibration का मतलब ये mean position, ये जो line है, this is the mean position of all the particles which are vibrating. ठीक है, और ये है इसका amplitude. अच्छा, एक बात पूछना है, बोलो कितना पार्टिकल्स एक वेव बनाते हैं? दो हाँ, मतलब infinity. हाँ, because there are uncountable number of particles, infinite number of particles. क्यों? क्योंकि ये जो wave travel कर रहा है, ये जो चीज हम लोग appear कर रहा है, it is not only one single particle. It is all the particles which are at certain instant placed at different points. मतलब सारा particle before the wave came over here were over this line. सारा particle ये line के ऊपर था. कहाँ पर था? मीन Right, at the mean position, right. All the particles were sleeping at this mean position. ठीक है? हाँ. जब भी ये wave disturbance यहाँ पर शुरू हो रहा है, वो क्या कर रहा है? सारा particle को उठा दे रहा है नीचे से. तब सारा particle क्या करना है? कूदने लग जा रहा है. और ऊपर नीचे कूद रहे हैं. तो कूदने के कारण ये पूरा wave बन रहा है. So, what is happening over here? यहाँ जो पार्टिकल था वो यहाँ पहुंच गया, यहाँ जो पार्टिकल था वो यहाँ पहुंच गया, यहाँ जो पार्टिकल था वो यहाँ पहुंच गया. So what is happening? All the particles either they are moving up from their mean position or they are so we are discussing about what type of wave? Transverse wave. Transverse wave, because the particles are vibrating perpendicular to the direction of the movement, right? So in a longitudinal wave they don't appear to be like this. Longitudinal wave ऐसा appear नहीं करते हैं, transverse wave भी ऐसे appear करते हैं. सर ऐसा क्यों है सर कि कुछ लोग ऊपर कूदा कुछ लोग नीचे कूदा? नहीं, ऐसा नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऊपर कूदा कुछ लोग नीचे कूदा. यही वाले लोग जो ऊपर कूदे थे, कूदने के बाद फिर से नीचे आके गिरेंगे, गिर के फिर वापस जाएंगे. वो ट्रैम्पोलिन में लोग जंप करते हैं ना, वैसे ट्रैम्पोलिन वाला जंपिंग वाला है. तो वही आदमी है सर. हाँ, वही आदमी नीचे एक बार जंप कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जंप कर रहा है, मतलब ऊपर जंप कर रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जंप कर रहा है, नीचे आ रहा है. So at any instant these are vibrating up and these are vibrating down. Now when the wave shifts a little towards the right, then what happens? These vibrations start moving in the upward direction and these vibrations starts moving in the downward direction. ठीक है? So infinite number of particles are there which constitute a wave. एक wave एक पार्टिकल से कभी बनता नहीं है. क्यों? क्योंकि उसको प्रोपेगेट करना है. So if it wants to propagate, it is made up of how many particles? Right, infinite number of particles. और So graph तक की entropy of a particle होता है. अरे ना अकबारी सीधा हाँ লংজিটুডাল ওয়েভের জন্য এই জিনিসটা আমাদের ভিজুয়ালাইজ করতে হবে. মানে সেটা লংজিটুডাল ওয়েভটা ফিজিক্যালি এরকম হবে না, ফিজিক্যালি অন্যরকম দেখতে হবে. জেনারেলি সাউন্ড ওয়েভসটা যেরকম কম্প্রেশনস রেরিফ্যাকশনস দিয়ে তৈরি, রাইট রাইট, কাছাকাছি. সো ওটা হচ্ছে স্প্রিং, একটা লম্বা স্প্রিং যদি ধরে নিয়ে দিয়ে যদি একটা জায়গাতে ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করা হয় তাহলে ওটা দেখা যাবে, ক্লিয়ারলি দেখা যাবে. But that will be a little different, not like this, exactly not like this. एकदम ही तो है. So is it clear कि वेव जो होता है वो बहुत सारा पार्टिकल से बना हुआ होता है, सिर्फ एक पार्टिकल से नहीं बनता है, right? And these are the basic definitions you need to know regarding waves. All right. The next important thing is wave equation.